A 5% model in rainwater harvesting, which is suitable for medium uplands, in which every plot has its own water body, the area of which equals to 5% of the total area of the plot. The pit is able to hold rainwater that otherwise flows out of the plot as runoff. The water held in pits irrigates the plots during water scarcity. 5% इट्स बेसिकली उसका लॉजिक यही है, सेविंग द क्रॉप फ्रॉम द ड्राई स्पेल. तो इसमें इसीलिए वो रेनफॉल जब कम होता है उसमें 5% काम आता है. This technology is basically used to save the paddy when the rains fail, when the paddy is ready to be harvested. Also, it has been witnessed that when the transplanting season is on, you have rains and then there's a dry period for 10 days. So farmer might have prepared his field and he's about to transplant, but there's no more water left. So a 5% basically is 5% of his plot. Suppose the plot is of 100 square feet. So the pit is in within 5 square feet of that plot, and it is located in the upper portion of the land. So with that water, with the first showers, the water is harvested in that pit, and the farmer can use that water for transplanting, for as we have covered in the other plots also. And if occasionally the rains do not come as they should, then he can occasionally irrigate the crop also right up to its maturity. This treatment has to be done not in 1 or 2 plots but in extensive area, at least 10-12 hectares, so that the regime also gets recharged. So over the years the land quality would also increase because of the subsoil moisture that is present because of the water that is harvested in such an extensive area. Measure the length and width of each individual plot. Mark 5% area of the plot in the following manner. Mark an area with length equaling 1/5 the length of the plot and width equaling 1/4 the width of the plot in the upper right corner of the plot. A pit is to be dug there. Suppose a plot is 150 feet long and 100 feet wide. The pit area needs to be 30 by 25 feet or 750 square feet. The depth of the pit is 5 to 7 feet depending on the type of soil. The excavated soil is used to strengthen the field bunds. The best time to construct a 5% model is between December and June. यहाँ का एवरेज रेनफॉल 1433 mm है, 1433 mm यहाँ पे रेनफॉल है, पर उसका लगभग मोर देन 90% जो वाटर है वो थ्रू सरफेस फ्लो आपका बाहर चला जाता है. तो इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरी था वाटर रिसोर्स, वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी हाई है, लेकिन उसका मैनेजमेंट हम लोगों को देखना था. तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि जो आपका लो लैंड का जो इस एरिया का लो लैंड है, वहाँ पे यदि हम इस तरह का कोई वाटर को रिटेंशन के लिए स्ट्रक्चर यदि कोई बनाते हैं, क्योंकि वो सीपेज लाइन में आएगा, तो यदि वैसा हम स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वो पानी उसके अंदर आपका पूरा साल भर रह पाएगा. तो इस तरह से देखते हुए हमने क्या किया कि ऊपर जो मीडियम अपलैंड है और अपलैंड है वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं जैसे 5% मॉडल वगैरह, और नीचे का लो लैंड जो मेरे पीछे में दिखाई दे रहा है, लो लैंड में हम लोगों ने लो लैंड टैंक यहाँ पे बनाया है. तो इस टैंक का जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इसका वॉल्यूम जो डिज़ाइन करते हैं,
जनरली 5 to 6% इसका सरफेस एरिया रहता है, जिसमें अबाउट 10 फीट की हम लोग डेप्थ रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे ज़्यादा डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं है आपका लोलैंड में। आपका वाटर टेबल लोलैंड में काफ़ी हाई रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगभग 10 फीट डेप्थ रखते हैं। जैसे मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, इसमें आपका 40 फीट इंटू 40 फीट इंटू 10 फीट डेप्थ का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें लगभग आपका 16,000 CFT के आसपास वाटर इकट्ठा होता है। आफ्टर दैट इसके बाद जो हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन में आपका स्टेप्स दिए जाते हैं। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें स्टेप्स दिए जाते हैं। लीड और लिफ्ट इसके अंदर दिया जाता है। पहले तो हम लोगों को मैंने इस सीपेज टैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन और इससे क्या फ़ायदा होता है वो भी नहीं पता था। जब हम लोग इसको बनाए उसके बाद से फिर यहाँ से हम लोग मैंने पहले तो एक ही बार फसल उगाते थे, अभी तो 2-3 बार मैंने फसल उगा सक रहे हैं। SRI is system of rice intensification and differs from the traditional method of rice growing on certain key areas. The first one is the planting of 7 to 10-day-old seedlings, which helps in developing a robust root system. This also helps in better aeration. The next major difference is that there is wider spacing between the seedlings. This helps in better growth because the roots can extract more nutrients from the soil and there is more space for the tillers to spread out. Another important difference is that unlike the traditional system of having standing water in the field, SRI uses an alternate wetting and drying methodology. This has shown to facilitate better growth of the plants as well as help conserve water. Over the years, it has been proven that the SRI method of cultivating paddy has been more productive than the traditional one.